Hello guys, today I am hereby to discuss some important questions from the chapters The Little Girls of your behavior books for the student of class 9. Let me start. The first question is, what did Kejia's father do before leaving for office? The answer will be, he daily visit Kejia's room, meet her and give a kiss. Question number 2. When did Kezia feel relief? Kezia felt relief when she felt when her father's carriage went away from the house. Who was in Kejia's dream? Butcher was in Kejia's dream. Why did Kezia get nightmares? Kezia got nightmares because she was alone with her fathers at home while her mothers and grandma are at hospital. तो यहाँ आपको याद करना है उसकी ग्रैंड मदर और मम जब हॉस्पिटल में थे तो वो फादर के साथ अकेले घर में थे, इसीलिए उसको नाइटमेयर होता था. राइट द मीनिंग ऑफ सेक्स इन फियर एंड कोल्ड. द मीनिंग इज शिवरिंग. हाउ Kejia's father punished her. Kejia's father punished her because he became angry and beat her pink palms with a ruler. Next question is, write the meaning of Soviet. It is wept. Next question is, why did Kejia's grandmother send Kezia down? Kejia's grandmother sent her down to have a nice talk with her parents. What did Kezia find there? Kezia noticed that her father was sleeping and snoring, and mother was reading a newspaper in their room. Next question is, write the meaning of soundly. Here soundly means undisturbed, मतलब उसको सोने में कोई डिस्टर्ब नहीं करता था. लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड Kezia अवॉइड हर फादर. तो क्वेश्चन का मतलब है Kezia उसका फादर को क्यों अवॉइड करते थे. सो हियर आंसर विल बी, Kezia अवॉइड हर फादर because according to her, he was an emotionless person, never spoke to Kezia lovingly and calmly. अर्थात वो एक इमोशनलेस पर्सन थे. केजिया के साथ कभी वो लविंगली बात नहीं करते थे, कामली बात नहीं करते थे. ही स्कोल्डेड हर, वो उसको गाली देते थे. एंड हर जब कोई मिस्टेक होता था उसके लिए स्कोल्डिंग करते थे. शी
stammered in front of her father because he was very huge and giant like figure far away from the warmth of a father. तो वो जब कोई मिस्टेक करते थे उस टाइम तो स्कोल्डिंग करते थे, फिर वो स्टेमरिंग करते थे, अर्थात उसको बात करने बहुत डर लगता था जब उनके सामने जाते थे, और उसको एक बहुत बड़ा दैत्य जैसा है, ऐसा जायंट जैसा है लगता था। और एक फादर का जो प्यार होता है, दैट इज़ उस लविंग होता है, उससे बहुत दूर लगता था। इसलिए कहा गया फॉर ए फ्रॉम द वार्मथ ऑफ ए fathers. So, dear students, hope you have got all these questions and answers on the basis of your text, The Little Girls. Thank you very much.